and welcome back to the Current Affairs show based on the Hindu and I am कुश पांडे। आपका स्वागत है फिर से हमारे खास शो में जो फोकस करता है on all the headlines that matter from the daily, that is the Hindu. So boys and girls, family members, a warm welcome again to the show that focuses from Monday to Friday at 8:15 a.m. every Monday to Friday on the important current affairs from the paper that is the Hindu. Now, before starting the video, to all the people who are our new viewers, well, this particular show has three divisions. First, we discuss the headlines from the paper, then we discuss it via the Hindu shorts and the static shorts, and then if possible, that is done the quiz that takes place every Friday, that is the weekly awareness quiz. So I hope everybody is now ready. I am present, I am on time, and you also are present on time with this particular show. And एक request है शुरू करने से पहले, there is a possibility that certain doubts could not be covered in the live session. So I need help of certain aspirants who are pretty good in terms of current affairs. If you are ready to help each other in the comment section, for example, if there is a particular question and I am unable to answer, it would be worthwhile if you would answer that question in the comment section to help your brother, to help somebody who is asking that particular question. So with this mutual cooperation feeling in our minds, in the show, let's start with the discussion of the Hindu show. तो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि आज के न्यूज मेकर्स कौन से हैं. So let's see the news makers first of all, guys. First of all, we have Uddhav Thackeray, who has warned against noise norms for Hindu festivals. I'll again repeat, sir, he is a very eminent figure, but exam में सवाल इससे यहाँ पर नहीं आएगा. Let's come to the second part, guys. Second part, we have Justice Karnan episode points to the need of revisit collegium system. I'll request again, you have to have an idea about who is Justice C.S. Karnan, number one, and number two, what is collegium system. इन दोनों को एक बार आप देख लीजिएगा, इनको डिस्कस आज नहीं करेंगे. Do read about the collegium system and also about Mr. C.S. Karnan. ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर important step हैं. Then let's come to the third part. एक जाना पहचाना विश्व प्रसिद्ध चेहरा, somebody who has worldwide fame. He is infamous for posting videos of wrestling matches in which he is beating a guy who is named CNN. So he is Donald Trump. Trump upset, and he is upset many of times at China's failure to curb nuclear pursuits of North Korea. We all know that North Korea had test fired Hwasong 14 or Hwasong 4, which was a ballistic missile that can attack till Alaska in US, and he is disturbed. He is frustrated कि China भैया क्यों कुछ नहीं कर रहा है. That is the third newsmaker, guys. Then let's come to the fourth newsmaker. We should promote especially women's sports, women playing in sports. This is Indian women overcome Sri Lanka, register fourth straight win. So after defeating the arch rivals Pakistan, they have defeated again one of their neighbors, that is Sri Lanka. We are hopeful कि ये यहाँ पर सेमीफाइनल्स में पहुँच जाएंगी. वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाए. एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, to anyone or everyone who will use this particular platform, the comment section, for chit chat, for ridicule, for anything that deviates the show from the dignity, from the focus, that particular aspirant would be blocked. That is my first and last warning to anybody who will do such an act. It's a request also, and it's a humble reminder because this is a pretty damn serious show. Maintain the decorum of the comments, maintain the decorum of the show. Now let's start with the discussion, guys, and let's show you now the page numbers that are important. And the page numbers are 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16 and 17. These are what are the page numbers. The headlines today are 12 in number, in which the maximum headlines you can find are on the most important pages, that is 11, 12 and 13. So I hope everybody has now noted down this particular page numbers. उसको आप comments में लिख दीजिए ताकि हमारे aspirants को देख पाएं. I'll again repeat, sir. 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16 and 17. These are what are the page numbers. Now let's start the discussion of the Hindu show. सबसे पहले इस इमेज को दिखाने से पहले let me just show you an image and you have to guess वो इमेज किस हेडलाइन की है. So let's have that particular image on the screen, that image will soon prop up on the screen, and वो इमेज आपकी स्लाइड पर है. उस स्लाइड पर हम इमेज को दिखा दें, and that image is of two people. One is a certain Prime Minister from India
and the second we have a certain head of Israel. So let's have this particular image. We have two smiling faces, two brothers, Karan Arjun कह सकते हैं इनको. We have Mr. Prime Minister himself, Narendra Modi, and second we have Mr. Benjamin Netanyahu. He has a very fanciful name, Benjamin Netanyahu. These are the two people who have signed 7 agreements among each other. जी बिल्कुल 7 agreements sign हुए हैं आपके between India and Israel. So let's discuss about this particular headline. तो आपके सामने स्क्रीन पर एक बार आपको दिखा दे the headline that we have at hand, and the headline is India Israel to set up $40 million research fund. Yes, so out of these 7 agreements, there is an agreement to set up a research and development fund of $40 million जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. यहाँ पर जो एक कीवर्ड है, the keyword in this particular part is this thing, that is strategic partnership. Partnership through a strategy. पार्टनरशिप थ्रू अ विजन. मतलब आने वाले समय में एक स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया हैज साइंड अप 7 agreements. So there is a strategic partnership between Israel and India. Well, for example, Modi is known as Namo in India. Similarly, Benjamin is known as BB. So Namo, BB are the two people that you saw in the image. तो Namo BB ने साइन किया है 7 agreements. यहाँ अगर हम बात करें, the major agreements were 3 in nature. Number 1, it was based on water. Number 2, agriculture, and number 3, we have space. It also included a joint fund of $40 million for research development in innovation. तो यहाँ पर हुए तो हैं आपके 7, but the major issues on which the funds are made are water, agriculture, space, including a $40 million joint fund for research and development in innovation, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं. We'll discuss this particular headline in detail in the coming pages, because on page number 12 and 11 this particular headline is in a much more detailed manner. So when we'll reach page number 11, we'll discuss this in detail, but still I'll show you the points that are important. But before that, let me just show you another image that is on the paper, and that image, guys, is of again Karan and Arjun, that is Namo and BB, and with them we have a small child whose name is Moshe. Now this particular child, जिसको हमने mark किया है yellow से, this child was an infant when Mumbai was attacked on 26/11, and he is now around 9 or 10 years old, and he was met by the Prime Minister himself and also Benjamin Netanyahu. Number 2. Number 3, in terms of new changes, Modi has provided his family with a long-term visa so that he can come to India and spread the awareness about his religion. तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक picture perfect moment है between Namo, BB and Moshe. क्या बात है, 3 लोग यहाँ पर हैं, and उनमें जो center में है, that child is Moshe. He is a lucky kid to have such eminent people around him. चलिए तो अब वापस आ जाए स्क्रीन पर, and now let's show you the static shots and the Hindu shots of this headline. That would be sufficient for this headline, guys. I hope you have a pretty good idea about the headlines. देखिए आपके सामने स्क्रीन पे, Israel and India have signed a strategic partnership in which they have signed 7 agreements, including a $40 million joint fund for research. Now this particular fund is called as India Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund. So याद रखिएगा, the name of the fund is India Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund. Apart from this particular fund and 7 agreements, our Prime Minister visited a city that is Haifa. Now, Indian Army celebrates the Haifa Day on 23rd of September. Now, why is it important? It is important because in the First World War, the soldiers from the princely states of Jodhpur, Hyderabad and Mysore took participation in a fight for making Haifa free. सो जो 3 आपके राज्य थे उस समय के, उनके जो जवान थे, जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर, उन राज्यों के सैनिकों ने इस पर्टिकुलर लड़ाई में पार्टिसिपेट किया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ हाइफा. दैट्स व्हाई September 23 is called as the Haifa Day. Now, in the memory of Jodhpur, Hyderabad, Mysore soldiers, they have set up a memorial called as the Teen Murti Memorial, which gives
विच गिव्स प्रिविलेज टू जोधपुर, हैदराबाद एंड मैसूर प्रिंसली स्टेट, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। वेल द BBM शो वुड बी रीअपलोडेड, परेशान ना होइएगा, बट पहले इसको देख लीजिएगा। हाइफा प्रिंसी नामदेव इज अ सिटी इन इजराइल। That city was made free by the Indian soldiers in World War I। उसका मतलब यहाँ पर यह है, मैं रिपीट कर चुका हूँ अक्षय जी, कि हाइफा क्या है। वापस स्क्रीन पे एक बार आ जाए। आई होप दिस हेडलाइन इज नाउ प्रिटी क्लियर टू एवरीवन। इट इज सुपर से भी ऊपर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन गाइस। नेक्स्ट हेडलाइन दैट वी हैव focuses on a state that is beautiful, that is famous, and that is again in controversy. Yes, that state, that is a beloved state of India, एक ऐसा राज्य जिसको हम हमारे देश का कोहिनूर मानते हैं। उस राज्य का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। So Jammu and Kashmir has become the last state to pass the GST। जी बिल्कुल बात समझिएगा, जम्मू कश्मीर हैज बिकम द लास्ट स्टेट टू पास द GST। ये है हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ द क्वेश्चन वुड कम कि व्हाई हैज जम्मू कश्मीर पास GST एट द वेरी लास्ट टाइम? जम्मू कश्मीर को इतनी देर क्यों लग गई? Well, the answer for that question is देर दुरुस्त आए, number 1, and number 2, the reason is Article 370। Because of Article 370, the GST has been passed last by Jammu Kashmir। थोड़ा भाव खा रहे हैं वो, रीजन है because Article 370 gives the power to the legislative assembly, to the Vidhan Sabha of Jammu Kashmir to independently check and pass फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। जो वित्तीय आपके सुधार हैं, चाहे GST की बात कर लो, चाहे बजट की बात कर लो, ये सारों का पूरा अधिकार उस राज्य की, जम्मू कश्मीर के राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को है, उसकी विधानसभा को है। बिकॉज दे हैव द इंडिपेंडेंट पावर, बिकॉज दे हैव स्पेशल पावर्स एज पर आर्टिकल 370, दैट इज रीजन वाई वहां पर आपका ये GST अब जाकर पास हुआ है। तो एक बार आपको दिखा दें हमने क्या क्या मार्क किया है हमारे पेज पर, तो देखिए स्क्रीन पर। Both the houses of the Jammu Kashmir Assembly have passed a resolution to adopt the GST, that is the goods and services tax. That is point number 1. Point number 2, the GST has been passed under the ambit of Article 370. Article 370 के अंतर्गत इसे यहाँ पर पास किया गया है, and this particular would bring the GST council under the Article 370। तो यहाँ बात समझिएगा कि the GST has been passed under Article 370 by the विधानसभा, number 2। number 3, अगर हम बात करें Article 370 gives, इसको दिखा दें स्क्रीन पर। Article 370 gives special status to the state should be used for development and empowerment। Instead the issue is being used too much for political mileage। तो यहाँ बात आप देखिए ध्यान से, आर्टिकल 370 में ये पूरा मौका दिया जाता है, द इंडिपेंडेंस हैज बीन गिवन टू द जम्मू कश्मीर असेंबली टू पास फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। वापस स्क्रीन पे एक बार आ जाएं, बात समझिएगा ध्यान से। एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड नेशनल इमरजेंसी, matters like expenditure, finance are under the exclusive control of the houses of जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर के पास ही ये जिम्मा है कि वो GST को पास करती या ना करती। फाइनली उसने GST को पास कर दिया है। एक आंसर आ रहा है कि द फर्स्ट स्टेट पॉसिबली इज असम विच हैज पास्ड द GST। ओके, तो चलिए अब आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। लेट्स शो यू नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टैटिक शॉट्स एंड देन आई शो यू द मैप एज वेल। सो लेट्स हैव द स्टैटिक शॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। जम्मू कश्मीर हैज अडॉप्टेड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस पर्टिकुलर टैक्स एंड काउंसिल इज अंडर आर्टिकल 370, number 1। number 2, under Article 370, Jammu Kashmir has been given special powers. For example, except for defense, foreign affairs, finance and communication, they are a part of the Vidhan Sabha of Jammu Kashmir and it is the last state to pass the GST। अच्छा, यहाँ पर एक डिबेट हो गया है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है। एक बार मैं चेक कर लूँगा, फिर बता दूंगा आपको फर्स्ट स्टेट कौन सा है, क्योंकि देखिए कई लोग के आंसर्स मिसमैच आ रहे हैं। ओके, now this is about the GST and Jammu Kashmir because we are discussing Jammu Kashmir for the very first time in our show. We have now a map
with the discussion on the map in the slide. So let's have the next slide guys, जहां पर कि क्योंकि हम पहली बार जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, so let's have the map along with the static shots of the map. Now आप देख सकते हैं यहां पर मैं मार्क कर दूंगा आपके लिए, पहले तो मार्क कर दें आप जम्मू कश्मीर को जो कि सेंटर में है. Now the capital of Jammu Kashmir is Srinagar and Jammu. Now Srinagar is the summer capital and Jammu is basically the winter capital. The current governor of Jammu Kashmir is Mr. N.N. Vohra. The current CM is Miss Mehbooba Mufti. In the south region अगर आप देख पाएं तो पहले आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और उसके बगल में है आपका पंजाब जो कि नीचे ही है आपके हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. फिर अगर हम बात करें इसके नेशनल बॉर्डर्स की, देन इन नॉर्थ एंड ईस्ट वी हैव अ बिग प्रेजेंस ऑफ चाइना जो कि ऊपर लिखा हुआ है आपके. तो इन द नॉर्थ एंड ईस्ट वी हैव बिग प्रेजेंस ऑफ चाइना जो कि टॉप पे है जम्मू कश्मीर के. देन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर इशू है. द इशू इज बिग हियर बिकॉज हियर वी हैव टू रीजन्स. वी हैव द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच हैज़ ऑल्सो गिलगिट एंड बल्टिस्तान. बात समझिएगा ध्यान से, Pakistan and China have started the China-Pakistan Economic Corridor, that is CEPC. Now that corridor will pass through Gilgit and Baltistan. Now Gilgit-Baltistan are under the control of Pakistan, but India wants the control of these regions. These two districts, that is Gilgit-Baltistan, are the regions through which the China-Pakistan Economic Corridor will pass, जिसको लेकर काफ़ी बड़ा इशू हुआ है. सिमिलरली एक और एरिया को मार्क कर दें जो कि चाइना के ऊपर ही है, अक्साई चिन. Now Aksai Chin is another controversial area because this area India treats as its own, but this Aksai Chin area is under the control of Chinese. ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है फ्रॉम द बॉर्डर्स. देन अगर बात करें 3 डिवीजन्स है आपके यहाँ पर. जम्मू है एक डिवीजन जो कि आपको दिख रहा होगा, लद्दाख एक डिवीजन आपका, एंड फिर आपका 3rd डिवीजन आपका यहाँ पर है कश्मीर. सो वी हैव द कश्मीर वैली, वी हैव द जम्मू रीजन एंड वी हैव द लद्दाख रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर जो कि यहाँ पर है. दिस इज द मोस्ट एग्जॉस्टिव डेटा of the entire Jammu Kashmir borders, the entire situation in the borders. इसको एक बार आप देख लीजिएगा. I request again to stop chit chat मत करिए. It's a request, focus on the show guys. यहाँ पर बात समझिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं बॉर्डर के ऊपर. आई होप दिस मैप इस सुपर से भी ऊपर, ताकि हम आगे बढ़ पाएं नेक्स्ट पार्ट पर. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस. आफ्टर पेज नंबर 1 लेट्स गो टू पेज नंबर 3. Okay, let's go to page number 3, and on page 3 we have the headline that is flood. अच्छा उससे पहले this is page number 3. This is page number 3. Now before discussing the headline, let me just show you an image. इस इमेज से कई लोग की नींद टूट जाएगी, कई लोग को जो नींद आ रही है वो खत्म हो जाएगी. They will POK stand for Pakistan occupied Kashmir. Anjali Mishra, you should know about POK because POK is something that we are very concerned. Okay, now let's show you the image guys. And ये रही आपके सामने image. I'll give you 5 seconds. You have to tell me ये जो image है ये किस animal की है. What is this particular image is of which particular animal जो कि screen पर आपको यहाँ पर बताना है. Okay. Before discussing the headline. Okay. So what is the image? इस image में इस animal का नाम क्या है? ओके तो वापस आ जाए. वेल दिस पर्टिकुलर इमेज इज ऑफ द ग्रेट राइनोसरस फ्रॉम इंडिया. ही इज़ द वन हॉर्न्ड राइनोसरस फ्रॉम इंडिया. हिप्पोपोटामस, क्या बात है, लोगों ने तो हिप्पोपोटामस कह दिया. वेल ही इज़ द फेमस वन हॉर्न्ड राइनोसरस फ्रॉम इंडिया. ये इमेज है यहाँ पर. नाउ देर इज़ अ पर्टिकुलर न्यूज़ अबाउट दिस एनिमल. वी हैव अ सेंचुरी. एक सेंचुरी है सर आपकी असम में. That sanctuary is Pobitora. I'll again repeat, sir. That sanctuary is Pobitora. Now, the Pobitora sanctuary has the highest density of rhinoceros in the world. मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा आपके rhinos हैं. So, we have a particular sanctuary. बात समझिएगा ध्यान से. I want you to focus. That is in Assam. That particular Pobitora sanctuary has the highest density of rhinos in the world. सबसे ज़्यादा घनत्व है आपका राइनोस का उस एरिया में जिसका नाम है पोबितोरा सेंचुरी इन असम.
Now the news is that that particular Pobitora sanctuary is under flood. वहाँ पर बाढ़ आ गई है और इन सुंदर rhinos को, I use the word sundar because these are beautiful in their own way. These beautiful rhinos have been shifted to some other place. तो एक बार दिखा दें आपको हेडलाइन, और ये रहे आपके सामने, flood water inundate Pobitora sanctuary. Now Pobitora Wildlife Sanctuary, which is in central Assam, the most dense habitat of one-horned rhinoceros in the world, has been completely submerged by flood waters of river Brahmaputra. Now all the animals are proceeding to nearby highlands for shelter. तो यहाँ पर ये चीज़ extremely important है. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं. आप क्या याद करेंगे? The one-horned rhinoceros that has the highest density in Assam in the Pobitora sanctuary. याद रखिएगा, Pobitora sanctuary. Those rhinos have been shifted because the Pobitora sanctuary is under flood. तो जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आपके राइनोस हैं उनको शिफ्ट किया गया है टू सम प्लेस एल्स. तो यहाँ पर बात समझिएगा ध्यान से कि सेंचुरी का नाम क्या है, वो है पोबितोरा. फेमस क्यों है? बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी. नंबर 2. नंबर 3, शिफ्टेड फ्रॉम पोबितोरा टू सम अदर प्लेस. ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स हैव द स्टैटिक एंड द हिंदू शॉट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. आई होप टेम्पो रोड पर सही स्पीड में चल रहा है. Okay, now Pobitora sanctuary, which is the most dense habitat of the one-horned rhinos in the world, has been submerged by river Brahmaputra. This particular sanctuary is in Morigaon, Assam. This sanctuary has 93 rhinos and this works under the government's vision of Indian Rhino Vision 2020. नितिका अग्रवाल एक एरिया है पास में आसाम के, वहाँ शिफ्ट किया गया है. वो एक हाईलैंड है, मतलब अगर आपका सेंचुरी एक लो एरिया है तो एक हाई एरिया पे शिफ्ट किया गया है. उस एरिया की जानकारी मुझे नहीं मिली, मैं पूछूंगा फ़ोन करके राइनो से कि भाई कहाँ गए हो. बट ये है हमारा इंपॉर्टेंट हेडलाइन, दैट इज़ फ्लड वाटर्स इनंडेट पोबितोरा सेंचुरी. दैट इज़ दी हेडलाइन. नाउ अगर इसकी एक और स्लाइड है, अगर है तो उसको दिखा दें. अगर स्लाइड्स की है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट पेज. Okay, let's proceed to the next page, guys. Okay. Now let's come to page number 11, guys. Okay. Now let's come to page number 11. Okay. Okay, I'll again repeat, sir. We are back with Karan Arjun 2.0. On page number 11, yes, it is not Shah Rukh Khan and Salman Khan, but it is Mr. Narendra Modi and Mr. Benjamin Netanyahu. These are the two people again in news. So let's show you the headline of Karan Arjun 2.0 from page number 11. That is the news page. India for Israel, says Modi. Force against bad, says Netanyahu. So Namo has said, he has coined a term, I for I, that is India for Israel, and Netanyahu has said that force against bad, they should become a force against all the nations which are funding terrorism, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है. अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए स्क्रीन पे हम आपको फिर से दिखाएंगे कि वो अग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, और ये रही आपके सामने, 1 सेकेंड, ये रही आपके सामने वो इमेज. This is basically the detailed information about the agreements, guys. So I want you focus again because this is the important part. Deals and discussions. Now there is a strategic partnership. आप देख सकते हैं, बाप होता है, बेटा बेटा, बाप is sitting and the beta is standing. So deals and discussions, a strategic partnership and signed 7 agreements including a $40 million joint fund for research development in innovation. ये यहाँ पर important part है. लोग तो अब बोल ही रहे हैं नमो एंड बीबी, बिल्कुल नमो एंड बीबी की जोड़ी है. फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से, इसको जूम करना पड़ेगा. An agreement in the field of water deals with increasing awareness about conserving water. This particular deal has been done between Israel Water Ministry and surprise UP Jal Nigam. देर आए दुरुस्त आए, उत्तर प्रदेश की नींद जागी है. They are trying to conserve water, especially the river water, that is Ganga. So they have an agreement in terms of water with
with the Israeli water board. Now the question that could come from this headline would be that which state's Jal Nigam, which state's water board has signed an agreement with the Israeli water conservation ministry? The answer would be Uttar Pradesh banega Uttam Pradesh. Then we have the second part. 3 MOUs have been signed ऑन स्पेस. बस इसको इतना याद रखिएगा, इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कट शॉर्ट कर दे रहा हूँ. याद रखिएगा सिर्फ 3 MOUs have been signed on space. चाय दो आनी चाहिए. So 3 MOUs should be signed on space. And then we have the third. This is the most important of the part, guys. समझिएगा ध्यान से. The Fund of Research and Development called the I4F. This is what is the short form of this particular fund, or the India-Israel Industrial Innovation Fund, will see both governments contribute $20 million to help research scholars manufacture their inventions easily. तो यहाँ पर थर्ड चीज़ समझिएगा ध्यान से कि there is a fund on research innovation, जो कि यहाँ पर important part है, that is called as I4F. I'll again request, question could come, what is the full form of I4F? And the answer would be India-Israel Industrial Innovation Fund. I'll again repeat for you guys, एक बार फिर, India-Israel Industrial Innovation Fund. That fund would have equal contribution from Israel-India. From India, $20 million, and from Israel itself, $20 million. So this show has become suddenly Chai Pe Charcha. We have our chai with us. I hope आपकी चाय भी आपके पास आ गई होगी. So now let's show you the PDF of this particular important graphic from the Hindu. So first of all, we should thank the Hindu because ये important graphic है guys. And हमारे director ने बहुत सही काम किया है to mark the things. So kudos to our team for that. This is the PDF version of this particular thing. इसका screenshot ले लो. Please take a screenshot of this particular image. I'll request again. This is a show that caters to all the audiences, whether we are English speaking or Hindi. So it's a request. Kindly adjust because we speak both the languages. We discuss in both the languages, English as well as in Hindi. This is what is the important PDF of this headline. एंड ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख दीजिए आप स्क्रीन पे, yes sir, we have taken a screenshot. Now let's proceed to the next part, guys. Okay, then one thing that you have to understand, and that particular headline is presents from the past. This I'll not discuss. This you have to go through. The headline that we have is present from the past. There are presents presented by Modi to Israel, to Bibi, and Bibi has presented to Namo. ऐसा लग रहा है हस्बैंड वाइफ की जोड़ी लग रही है अब तो, बट स्टिल दोज प्रेजेंट्स इनको आप देख लीजिएगा. इसको डिस्कस मैं यहाँ पर नहीं करूँगा. द प्रेजेंट्स दैट आर शेयर्ड बाय मोदी, by Namo to Bibi, and from Bibi to Namo, this you have to discuss. MOU stand for Memorandum of Understanding. Somebody, some aspirant who is pretty good in banking can comment in the comment section about what is MOU, because I have discussed ekta hi, we have to come together to succeed in life. So I want anyone to take in the comment section, to write in the comment section about what is a MOU, so that one of our aspirants could get help. Okay, now let's proceed, guys. I hope the tempo is good. Okay, then let's come to, one second. Okay, then let's come to the next part, guys. And next part that we have is, one second, and that, okay, and that part, guys, is this particular thing. This particular part, that is page number 11 again. Okay, now we'll focus on two things. First of all, my question is, who is the Foreign Minister of India? Yes, we know that Modi visits maximum places, so people abroad could be confused कि भाई इंडिया का जो विदेश मंत्री है वो मोदी ही है. But that is not the case. So the question is, who is the Minister of Foreign Affairs for India, Minister of External Affairs for India, number one, and number two, we'll discuss about BIMSTEC. So we have two things. Let's show you the image, guys. The image that we, the headline, that is Sushma Swaraj, Mrs. I was corrected yesterday. So Mrs. Sushma Swaraj to visit Nepal in August to participate in the BIMSTEC summit. External Affairs Minister Sushma Swaraj will travel to Nepal next month
for bilateral talks with the nation's political leadership. Sushma ji will visit Nepal in August for BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, that has been said by the ambassador of Nepal to India, Mr. Deep Kumar Upadhyay. तो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिसेस सुषमा स्वराज विल विजिट नेपाल. देखिए विजिट नहीं करेंगे तो बाद में नाम लेना हम भूल जाएंगे, तो इनको करना चाहिए विजिट कंट्रीज को. एंड शी वुड पार्टिसिपेट इन द बिम्स्टेक समिट, एंड दैट हैज बीन सेड बाय द एम्बेसडर of Nepal to India, that is Mr. Deep Kumar Upadhyay. Now let's show you the static Hindu shots of this headline, जो कि वो sufficient होगा इस particular headline के लिए. Let's have the static Hindu shots. Sushma Swaraj will visit Nepal for BIMSTEC summit. Now BIMSTEC stand for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Now this particular organization has 7 countries as members. Now the headquarters of this particular cooperation is in Dhaka, Bangladesh. The members are Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. And this particular organization was set up in the year 1997, जो कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे. That is again pretty damn important, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आई होप इस चीज़ को आपने देख लिया होगा. करेंसी इजराइल की है शेकेल, मुझे भी याद हो गया. द करेंसी ऑफ इजराइल इज शेकेल इफ आई एम करेक्ट. ओके नाउ ओके, राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे. डू नॉट सी राहुल गांधी बिकॉज वो हेडलाइन में नहीं है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. After this, let's come to page number 12, guys. Acha, before the headline, this is page number 12. This is the Trumpy page, guys. Okay, वापस screen पे आ जाए. I have a question again. The question is, which country is the most jealous of India? सवाल सुनिएगा ध्यान से. Which country is the most jealous of India? That is my question. I'll give you 2 seconds because that headline we'll discuss now. Hint number 2. That country which is the most jealous country, that country which is most jealous of India, that country has test fired a missile. Yes. And that particular missile, and according to them, that missile is a करारा जवाब to India's cold start operation. समझिए ध्यान से. We have a certain country, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा आपको. That country is the most jealous of India. That country has test fired a missile. जिसने जरूरत की है, they have test fired a missile. And according to them, this missile is the correct retaliation. It is the apt retaliation, the apt answer to India's cold start operation. Now, first of all, what is cold start? According to that country's sources, मतलब उस कंट्री का मानना है, ये मानना भारत का नहीं है, that country's मानना है, according to that country's sources, India is planning to have combination of different regiments come together to avoid any nuclear attack by that country. बात समझिए ध्यान से. According to that country, उसका नाम आप नाम नहीं लूंगा. That country का मानना है कि India is starting और India is applying a cold start operation. That means that different regiments of the military will come together and they will try to avoid any nuclear attack from that country. Now, कई लोगों ने guess किया है, कई लोगों ने guess नहीं किया. Let's show you the headline. The country's name is, it is called as of now, it is called as Pakistan. So let's have the headline, guys. Pakistan test short-range ballistic missile, that is Nasr. Now, Army Chief, who is, उनका नाम है कमर बाजवा, he is the Army Chief of Pakistan. According to him, this is a करारा जवाब to the cold start operation of India, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं. देखिए, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है आपका टॉपर, एक बच्चा आपका फेलियर. टॉपर को सब कुछ मिलता है, फेलियर कुछ नहीं मिलता, तो फेलियर कहता है माँ से मुझे भी कुछ दो. तो यहाँ पर वही हाल है कि इंडिया इज द टॉपर एंड पाकिस्तान इज द फेलियर. फेलियर भी डिमांड करता है कि हमें सब कुछ मिले. सो यहाँ पर इसलिए वो जेलस है. सो दे हैव लॉन्च्ड अ मिसाइल कॉल्ड एज नसर. एक बार स्क्रीन पर दिखा भी दें आपको.
the Pakistan has test fired a short range missile called as Nasr. Now the range of this missile is between 60 to 70 kilometers, and this is an apt answer to the cold start mission. I'll again repeat, sir, this particular cold start mission is an alleged mission that is suggested by Pakistan. इंडिया ने कभी इस मिशन के बारे में सामने नहीं आया है, ये पाकिस्तान का एक सपना, पाकिस्तान का एक डर है कि भारत कुछ कर रहा है दैट इज रिलेटेड टू कोल्ड स्टार्ट. देखिए लिखा भी हुआ है, द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन or the cold start mission is intended to allow India to perform holding attacks in order to prevent a nuclear attack from Pakistan in case of conflict. So according to Pakistan sources and not Indian sources, this is a mission that tries to avoid any nuclear attack from the side of Pakistan. वापस स्क्रीन पे आ जाएं, and then now let's have the static shots and the Hindu shots of this particular headline. Okay, ये रहा आपके सामने. Pakistan is equal to a short range surface to surface missile. वो आप करिएगा, short range surface to surface missile, जिसका नाम है नसर. Now this is in response to cold start. Now what is cold start? Cold start basically is an Indian military action for use in a possible war with Pakistan, military conducting offensive operations as a part of unified battle groups. Now the range of Nasr is मात्र 60-70 kilometers. It is based on shoot and scoot. Now shoot and scoot is equal to Arvind Kejriwal. Now I'm not trying to demean that guy, but the basic nature. For example, you allege आपने हमला किया भाग गए. You attack and then run away. That is what is shoot and scoot. So for example, you criticize and then run away. So that is what is shoot and scoot. So this particular missile would attack and then run away. That would be the modus operandi, the mode of action of this particular missile. That means that firing a target and then immediately moving away from that location from where the shots were fired to avoid any counter fire, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे. This is the entire discussion about the Nasr missile, about the test fire. अनिल साहनी, किसका मीन करें, क्या मीन बताना चाह रहे हैं आप? शूट एंड स्कूट एक फ्रेज है आपका सर. शूट एंड स्कूट मीन्स हमला करो भाग जाओ, क्रिटिसाइज एंड रन अवे, दैट इज व्हाट इज शूट एंड स्कूट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा लिखा किसी ने, नसर का कोई नहीं होगा असर. दैट इज व्हाट इज अ मैसेज बाय वन ऑफ आवर एस्पायरेंट्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. नेक्स्ट हेडलाइन दैट वी हैव इज ऑफ अनदर नेशन. That nation is much more better than Pakistan, and that nation is a very strict nation in terms of rules regulation. मतलब वो nation में इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आज़ादी इंडिया में है. That nation, guys, is Turkey. Now imagine that in your notebook, in your school notebook, you are taught that we are created by Ram, by Allah, by our gods, and the discussion on the evolution, the discussion on the gradual development of a human is not taught. हमें एक तरफ religious जो एक discussion है उसकी बात की जाए, but we take away the basic logic that is the evolution of human being. So in Turkey, they have removed the evolution theory and have used the theory of religion. उस theory का नाम है creationism. So they have removed evolution theory of humans from the school books and they have included the creationism theory. Now creationism means to agree and to believe that we are born and brought up by gods. There is no logical history of humans. तो ये यहाँ पर हुआ है इन टर्की. तो एक बार आप स्क्रीन पर दिखा दें वो हेडलाइन क्या है. द हेडलाइन दैट वी हैव इज टर्की स्क्रैप्स एवोल्यूशन फ्रॉम सिलेबस. ये यहाँ पर हमारी हेडलाइन है. A move by the Turkish Education Ministry to remove evolution from the national school curriculum has taken a big controversy, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. यहाँ पर they'll now follow the creationism and that has been done by the authority under Mr. Recep Tayyip Erdogan, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है. So वापस स्क्रीन पे आ जाए. याद रखिएगा कि they have removed the theory of evolution and they have now implemented the theory of creationism. So now let's show you the image with the slide with the important details of this particular thing. हिंदी में बता रहे हैं प्रतिभा जी आपको, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है.
टर्की ने रिमूव किया है एवोल्यूशन थ्योरी को स्कूल करिकुलम से, उसके का यूज करेगा ये क्रिएशनिज्म। एवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशनिज्म? The belief that the universe and living organisms originate from specific acts of divine creation as in the biblical account rather than natural process such as evolution। मतलब यहाँ पर उत्पत्ति हमारी भगवान ने कहा तथास्तु और हम पैदा हो गए। That is what is the and I'm not trying to be jovial about this particular thing, but that is what is the message given by Turkey, that creationism है, मतलब भगवान ने कहा तथास्तु और हम पैदा हो गए। That is what is the mention, and evolution को उन्होंने यहाँ पर माना नहीं है। The capital of Turkey is Ankara, the currency is lira, and this is one of the transcontinental country। बात समझिएगा, टर्की के साथ एक खासियत क्या है? The खासियत is, and the importance is that it is a transcontinental country. It means that this country is in Europe and also in Asia. So this country's one part is in Europe and the other part is also in Asia. Now अगर हम यहाँ बात करें, north west we have Greece and Bulgaria, north east we have Georgia, in east we have Azerbaijan and Armenia, Iran, and in the south we have Iraq and Syria. So let's show you now the image of the map that is next to this particular slide, जहाँ पर कि आप देख पाएंगे, डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं about this particular thing। मेरे को हटा दिया जाए, आप देख सकते हैं कि अंकारा इज मेंशन, अंकारा इज द कैपिटल, उसको मार्क कर दिया जाए, दैट इज द कैपिटल गाइस। एंड फिर मार्क कर दे बॉर्डर्स को, फॉर एग्जांपल वी हैव जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, दीज आर व्हाट आर द बॉर्डर्स, जो कि स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा होगा आपको। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें, दीज आर कवर्ड फ्रॉम टू साइड्स, फ्रॉम ब्लैक सी, फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। द ओनली इंटेंशन ऑफ आर्स is to make you understand कि the map reading is important. Map reading is not only important for geography but also for normal development. अगर आपको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है तो दुनिया में नाम कैसे कमाएंगे? So it's a request that you should at least have a basic idea about the maps and also about the famous countries. तो ये सामने आपका रहा मैप, हो सकता है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए because this is again pretty important. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। Let's proceed now to the next part. It's okay. Let's proceed now to the next part, guys. Let's come to page number 13. Okay. एक सवाल आ रहा है, transcontinental means any country that is in two continents. For example, in Israel, in Asia, as in also in Europe. Okay. Now let's come to page number 13, guys. एक second. Let's come to page number 13, guys. 1 minute. Okay. We are on page number 13. Now let's come back to the screen, guys. Okay. Now, under GST, there are two types of goods that are under confusion. दो तरह के goods को लेकर हो गई है confusion. Number one, we have branded goods, and number two, we have non-branded goods. Now, all the goods which are sold without any brand, those goods will have no tax. Under GST, those goods which have no brand, for example, अगर आपका चीनी है और चीनी आपको खुले मिले विदाउट एनी ब्रांडिंग, मतलब चीनी आपको आशीर्वाद की ना मिले, पतंजलि की ना मिले, that are non brands, that particular thing would be under no tax. But all the goods that are branded, that come under a packaging, those goods would attract a tax of 5%. Now there has been a big confusion about the branded goods and also about the non-branded goods. So let's show you the image, guys. The image is the headline, guys, and the headline is Finance Ministry clarifies definition of branded items for GST. वित्त मंत्रालय ने इस बात को क्लियर किया है कि एक ब्रांडेड आइटम क्या है और एक नॉन ब्रांडेड क्या है। ये रहा आपके सामने इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी। The Ministry of Finance on Wednesday clarified that for the purpose of goods and services tax applicable, an item will be deemed as branded if it carries a brand name or trade name that is under the act, that is Trademarks Act 1999. बात समझिएगा ध्यान से,
अगर वो पैकेजिंग है जो कि एक ब्रांड की है एंड दैट पैकेजिंग इज अंडर एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज अंडर द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999, ओनली देन 5% टैक्स वुड बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हाट इज बेसिकली अ ब्रांड, एनी, ओके, देखिए लिखा भी हुआ है कि एनी ब्रांड नेम that is under the Trademarks Act 1999, that brand would be called as that brand would attract a tax of 5%. अब यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दें आपको, देखिए लिखा भी हुआ है the GST rate on the supply of food items such as चना और पनीर, honey, wheat, rice, other cereals, pulses, flour, then these are nil. But अगर इसी को आप पैक कर दें, इसी को अगर आप पैक कर दें इन कंटेनर, देन दे वुड बी अ टैक्स ऑफ 5%. तो वापस स्क्रीन पे आ जाएं एक बार एंड नाउ लेट्स शो यू द स्टैटिक शॉट्स ऑफ दिस हेडलाइन. लेट्स हैव द स्टैटिक शॉट्स ऑफ दिस हेडलाइन गाइस, एंड ये रहा आपके सामने. ओके, द स्टैटिक शॉट, यस, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट द आइटम्स are called branded if it carries a brand name or trade name under the Trademarks Act 1999. GST would be 5%. Containers having brand names would attract a tax, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है. सोनल जैन, हम हिंदी में भी आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आप समझ पाएं हिंदी में भी. Now let's come to the next slide guys. I hope next headline guys, वापस स्क्रीन पे आ जाएं. And the next headline is from the Ministry of Power. And who is the Minister of State for Power? The answer is, it is Mr. Piyush Goyal. So let's have the headline guys on the screen. The headline that we have is Piyush Goyal unveils app on the power data. एक बार स्क्रीन पे हमारे कैमरा में दिखा दें. Piyush Goyal unveils app on power data. So there is now a launch of an app that has been launched by the Minister for Power, Coal, New and Renewable Energy, that is Mr. Piyush Goyal. And along with the app, they have also launched a e-bidding solution that would allow state to select among the producers of power, to select the powers from different power producers, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख भी रहे हैं. That is again pretty important on the screen. तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपके सामने कि they have come together and they have started, Mr. Goyal has unveiled a plan. That plan is for checking of data. And the other part here we have is that there is also a e-bidding platform where states can come and decide for their power producer. तो वापस स्क्रीन पे एक बार आ जाएं. ओके, वापस स्क्रीन पे आ जाए. तो दो चीजें हैं सर. पहला है there is the launch of an app. That app will focus on telling us what is the data, what is the power data given to us. ट्रांसपेरेंसी होगी, कितना डेटा हमें दिया गया, what is the total supply of power. That is that particular app. That is point number 1. Point number 2, we have an e-bidding platform in which the states can come and bid for their selected power producer. वो उस particular प्लेटफॉर्म पे आएंगे और बताएंगे, जानेंगे कि किस पर्टिकुलर सप्लायर को वो चूज करें. एक सवाल यहाँ पर आ रहा है अनवेल. मैं चाहूँगा कोई कमेंट्स बता दे कि अनवेल का मतलब क्या है. Different power producer means in India we have private companies, we have public companies. Those companies produce electricity. So by the portal they would come to know which is the producer that is sufficient for them. ये यहाँ मतलब है विजय गोयल नहीं भैया, यहाँ आंसर है पीयूष गोयल. पीयूष गोयल इज द मिनिस्टर ऑफ पावर, नॉट विजय गोयल. अब एक सवाल कई बार आ रहा है, what is the name of the app? So now let's show you the image, the slide with the name of the app. E-bidding means online bidding for anything. Here online bidding would be done for selecting of power producer. So let's have the slide guys, and the slide will have the name of the app as well. Minister of State for Power, Coal, New and Renewable Energy, Mr. Piyush Goyal, has launched an app that provides consumers with more transparent data on the sourcing of electricity. And also they have launched an e-bidding portal. The name of the app is Merit, that is MERIT. The full form is Merit Order Dispatch Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency. That is what is the name of the app guys. I'll again repeat फिर से Merit app, that is Merit Order
dispatch of electricity, for rejuvenation of income and transparency. That is what is the name of the app, guys. वापस एक बार स्क्रीन पे आ जाएं. I'll request, sometimes in the Hindu they do not give the information in detail or in totality, especially for any government release, especially for any government notification. You can go to the PIB website. PIB website stand for the Press Information Bureau. ये आपके लिए एक हेल्प भी है कि कल को कोई रहे ना रहे आप समझ जाएं कि कहाँ देखना है आपको. So in terms of any information on government notification, on government release, you can go to PIB, that is Press Information Bureau's website, and you can check for the exact information about any government notification, whether it is government notification or any government योजना. सारी जानकारी कहाँ मिलेगी आपको? On the PIB website, that is the Press Information Bureau website. I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलिए बढ़ते हैं आगे. Let's come to page number 14, guys. Okay. So we are on page number 14. This is the business page, guys. This is page number 14. ये एक बार आप देख लें स्क्रीन पर. This is page number 14, and on this page we will focus on this organization, that is EPFO. Now EPFO stands for Employee Provident Fund Organization. For opening a public provident fund or for opening a employee provident fund, the body concerned is EPFO. Now EPFO is the regulator of all the provident funds. So for example, if I have to open a provident fund, I need to provide funds to EPFO so that they can open my provident fund. Similarly, when the EPFO has to provide me money, provide me interest, they also need to send me money through a particular deposit. Now we all know that the transfer of funds and the deposit is possible in a bank. I'll again repeat, sir, अब हिंदी में. EPFO में अगर मुझे एक प्रोविडेंट फंड ओपन करना है तो मुझे पैसे EPFO को देने होंगे. उसके लिए मुझे ट्रांसफ़र करना होगा, फर्स्ट. सेकंड, अगर EPFO को मुझे इंटरेस्ट पे करना है या फिर मैच्योरिटी पर पैसे देने हैं तो उसे भी मुझे एक फंड में डिपॉजिट करना होगा वो फंड्स. नाउ both these two functions are done by a bank. Both these two functions are done by a bank. So EPFO, which stands for Employee Provident Fund Organization, which is the regulator of the provident funds, which is set up in New Delhi, that particular fund has taken help of 5 more banks for supply, transfer and payment of funds under the provident fund. तो provident fund के अंतर्गत सप्लाई करने के लिए पैसा, ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा और डिपॉजिट करने के लिए पैसा उसने 5 और बैंक से साथ टाई अप किया है. तो एक बार दिखा दें स्क्रीन पर. हेडलाइन क्या है? द हेडलाइन इज EPFO adds banks to network, tie-ups including 4 private lenders and Bank of Baroda to help fund save 300 crore rupees annually, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं. देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है. The Employee Provident Fund Organization on Wednesday signed an agreement with 4 private banks and Bank of Baroda for collection of provident fund dues from employers and payment to its subscribers. तो ये यहाँ पर एक important part भी लिखा हुआ है आपके सामने. Similarly, this particular transaction will have 0 transaction fee because no particular fee will be taken by the banks, which would save around 300 crore money for EPFO. तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि करीब 300 करोड़ का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा टू EPFO because now there would be no transaction fee by these 5 banks. भाई आपको दिखा दें कि उन बैंक से नाम कौन कौन से हैं. These are 5 more banks. इनके नाम हैं ये ICICI बैंक, HDFC बैंक, Axis बैंक,
Kotak Mahindra Bank. These are the 4 banks, guys. And then we have Bank of Baroda making it 5. Initially, we only had 1 bank. That was State Bank of India. सिर्फ वही बैंक था जिसके ऊपर था कलेक्शन करने का. अब आपके पास 9 और बैंक हैं. सो 5 नए हैं, 1 पुराना है, और दिसंबर में 4 और बैंक थे. तो एक बार दिखा दें स्क्रीन पर कि अपार्ट फ्रॉम दीज 6 बैंक्स देर आर ऑल्सो 4 अदर बैंक्स जो कि इस पर्टिकुलर टाइप का हिस्सा थे. दोज वर इंक्लूडेड इन दिसंबर, जो कि हैं आपके पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ये आपके और बैंक भी हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पर. सो वी हैव अराउंड 10 बैंक्स इन दिस पर्टिकुलर टाई अप विद द ईपीएफओ. तो एक बार दिखा दें स्क्रीन पर आपको अब इसका स्टैटिक शॉट्स एंड हिंदू शॉट्स, ताकि हम आगे बढ़ पाएं टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. गाइस, लेट्स हैव द स्टैटिक शॉट्स. गाइस, ये रहा. EPFO is equal to agreement with 4 private banks and Bank of Baroda that has been done. 4 private banks और 1 Bank of Baroda के साथ हुआ है टाई अप आपका. Now this particular tie up is taken place because of the collection of provident fund dues from employers and payments. The private banks are ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Kotak Mahindra Bank. There is no transaction fee. टोटल आपके 10 बैंक्स हैं, जिनमें कि पहले पुराने आपके 6 हैं, अब पुराने आपके 5, नए आपके 5 हैं. बॉब स्टैंड फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, गाइस. एंड EPFO was started in the year 1952. सेंट्रल प्रोविडेंट कमिश्नर जो इसके हैं वो हैं आपके VP जॉय. ये है आपके सामने स्क्रीन पर द टोटल डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. Please do take a screenshot of this particular image. The earlier banks are PNB, Allahabad Bank, Indian Bank, Union Bank of India. These are the earlier banks as well. The first bank, of course, was SBI. सुमंत कौर, well, डिस्कस कर चुके हैं हम EPF के बारे में. अगर कोई चाहे तो somebody can help सुमंत कौर in the comment section about what is EPFO. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's come to the sports section, guys. बड़ी जानकारी खत्म हो गई, अब आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पे. Okay, and this is the sports section, guys. One second. We are on page number 16, and okay, this is page number 16, guys. And let's show you the headline. The headline is India has won the Asian Championship, and that particular championship has been won by Pankaj Advani for India. So देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि इंडिया हैज़ वन द एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप बाय बीटिंग पाकिस्तान इन बिश्केक इन किर्गिस्तान. इसको जूम करना पड़ेगा. इंडिया, आदित्य सिंह, सारे बैंक्स का नाम याद नहीं करना है, पर जो नए बैंक हैं, जो 4 आपके प्राइवेट बैंक्स हैं और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम टू स्पोर्ट्स सेक्शन, गाइस. India has beaten Pakistan in the Asian Team Snooker Championship in Bishkek in Kyrgyzstan. They have defeated Pakistan, and the main player behind this particular defeat was Pankaj Advani, who is one of the world's leading snooker and billiard players. So he has won this particular event for India, and they have beaten Pakistan. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Okay, now before showing you the headline, we are on page 17 first of all. Okay, let's take a poll in the comment section. How many of you love Messi over Ronaldo? According to you, who is a better player? Is it Lionel Messi or is it Cristiano Ronaldo? तो comments में आप लिख दीजिए, इनको आइडिया है फुटबॉल का कि out of the two, who is your favorite player? My personal favorite is Messi. Yes, I also love Ronaldo, but for me, Messi is the all-time greatest player for me. So आप कमेंट लिख दें कि आपका बेस्ट प्लेयर कौन सा है. लेट्स नाउ शो यू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. सुगंधा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू बिकॉज आपका आज बर्थडे है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द हेडलाइन गाइस. द हेडलाइन इज मेसी टू स्टे एट बारका. सो अ गुड न्यूज कमिंग फ्रॉम बार्सिलोना. FC Barcelona has extended the contract of Lionel Messi until June 30, 2021. So it's highly possible that he would end up his last years of football in the club that is Barcelona in Spain. जो कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, हमारे पास बाढ़ आ गई है. कई लोग कह रहे हैं मेसी, ज़्यादा लोग कह रहे हैं, कुछ लोग रोनाल्डो कह रहे हैं, बट येस, मेसी perhaps is the greatest player according to me. So this is what is the last headline, guys.
कि अब रोनाल्डो के फैन आ गए. सो दिस इज नाउ द पेज नंबर्स गाइस. एक बार दिखा दें स्क्रीन पर आपको. द पेज नंबर्स 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 17. These are what are the page numbers. ये आपके सामने. Now let's show you the headlines guys. अब ये आपके सामने headlines. These are the headlines guys. Okay. Yes, now Messi is married. रोनाल्डो के भी बच्चे हैं भाई. तो ऐसा नहीं रोनाल्डो आपके सिंगल ही, उनके बच्चे भी हैं. इंडिया इजराइल टू सेट अप $40 million रिसर्च फंड. JNK houses adopt GST resolution. Flood waters inundate Bobitora sanctuary. Then we have India for Israel says Modi. Sushma Swaraj to visit Nepal in August. ये headline है. आगे बढ़ते हैं. Pak test short range ballistic missile Nasser. Turkey scraps evolution from syllabus. Then Fin Minister clarifies definition of branded items for GST product. आगे बढ़ते हैं. Goel unveils app on Quad data. EPFO adds banks to network tie-ups including 4 private banks. आगे बढ़ते हैं. Last 2 parts. India clinches Asian Championship, and then we have last headline guys. Messi to stay at Barca. Yes, he is married to his childhood love. Everyone should do that. Okay, now let's come to the last slide guys. Okay, now this is a slide for everyone, and especially for people who are studying, who are aspirants, and especially for those people who are unable to crack any paper, जिनको दिक्कतें हो रही हैं to crack any paper. ये देखिएगा, ये आप सबके लिए है, ये उनके लिए भी है जो rich हैं, famous हैं, जो successful भी हैं. If you have a family that loves you, a few good friends, food on your table, and a roof over your head, you are richer than you think. अगर आपके पास आपकी फैमिली है, अगर आपके पास कुछ आपके खास सच्चे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आपके टेबल पे खाना आपको मिल जाता है, और अगर आपके ऊपर छत है, तो आप बहुत अमीर हैं. आप कईयों से कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं, क्योंकि इन द वर्ल्ड मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल facing this particular trouble. Either if we are rich, then we do not have parents. If we are rich, we do not have family. But अगर आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं आप औरों से एक बेहतर स्थिति में हैं. You are at a better condition than the others. So always remember, always when you are frustrated, always when you are demotivated, always when you feel like neglected, when you feel like a loser, remember these lines guys, because these lines are as true as it can get. If you have a family that loves you, a few good friends, food on your table, and a roof over your head, you are richer than you think. With this is Kush Pandey signing out from the show. We'll meet you tomorrow with the quiz. I am Kush Pandey again, and एक साथ बोलिएगा, peace out.